Good evening, everyone. Welcome to today's session of NutriLife 360. I am your host, Ruchita, and today we're going to discuss a very important subject. We've all heard that breakfast is the most important meal of the day. But why? How does it affect our gut health and our weight? What is the relation between the breakfast that we have and the cravings that we have throughout the day? Moreover, does morning nutrition impact our mental health? To answer all this and so much more, we have a very special line of guests with us tonight. To start the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully. Over to you, Farah. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. Now, today we are going to be talking about morning nutrition. And morning nutrition is one of the most important things. They often say that eat your breakfast like a king, eat your lunch like a prince, and eat your dinner like a pauper. When you start your morning nutrition, you got to understand that the most important thing that is required for good health is the amount, the quantity of protein that you're eating during breakfast. Most people think that all this supplementation of protein programs are meant for sports people, athletes. You couldn't be far from wrong. Okay. An athlete, for example, I'll just give you a very simple example. An athlete can easily get away by eating 6 to 8 eggs in breakfast because from 6 to 8 eggs, they will get roughly between 36 to 48 grams of protein. But they'll also get the extra cholesterol. But since they're working it out, at a different level, it's okay, they can take it. But if you try and eat 6 or 8 eggs a day, you'll be in serious trouble. And hence, supplementation programs are not only for sports people, but they're even more important for people who are not involved with sports. If you're not consuming 1 kilo of protein powder in a month for yourself, that is for an individual, not for a family or four or something like that, 1 kilo per individual, you are going to be protein deficit. And once you're protein deficit, okay, you will realize, since protein is the building block of life, okay, slowly and surely it will show on your hair, it will show on your skin, it will show on your nails, but more important, it will show on all the repair that your body needs. And due to the lack of protein, you will realize that you will be more susceptible to all lifestyle problems. People with insulin insensitivity, one of the most important things that they need in the protein, in the morning nutrition is good quality protein and good quality fiber. Once they put that in, okay, then they will realize that if they are monitoring on a regular basis, the insulin sensitivity will be far lesser. Okay, the glucose spike will be much more controlled. So don't underestimate the morning breakfast. Ask yourself a question. What did you have for breakfast today? And did your breakfast contain at least 50% of the protein and the fiber requirement that your body's nutritional needs are met? So don't take this lightly. Morning breakfast is one of the most important things. I understand that as lifestyles have started to change and people have started becoming busy with their jobs, breakfast is the first thing that gets compromised. In fact, it should be the last thing that gets compromised. So I hope you get something from this, this session. I hope you take home something, and I hope tomorrow morning, when you wake up and you have your breakfast, you ask yourself a question:
have I got my protein and fiber requirement? At least 50% of my protein and fiber requirement that I need for my day. If not, do something to change it. Today, you are lucky to hear about this topic from somebody who was not very serious about it and gradually being busy as a corporate executive, was moving away from good health. Finally, he realized that since asset is his health is his biggest asset, uh, he needs to be serious about it. Not only did he change his health around, but he's changing a lot of people's health around, okay, forming great communities and somebody from whom you can really take home a lot of knowledge and energy and enthusiasm for your morning breakfast tomorrow. So over to you, Raj. Thank you very much, Farooq, and good evening, everybody. As introduced, I'm Raj, and I'm connecting to you all from Gurgaon. And as Farooq rightly pointed, that morning nutrition, the importance. Now, for the first time, when I heard this thing that you need to eat like a king, I thought, दो पराठे की जगह तीन पराठे खाओ, चार पराठे खाओ, साथ में लस्सी भी पियो, थोड़े फ्रूट्स भी खा लो. मुझे लगा राजा का मतलब ये है. And little did I realize that what the actual definition is that your breakfast needs to be nutritious. The right set of protein, omega-3 fatty acids, vitamin, mineral, they all need to be there. So tonight we are going to see that what is the importance of morning nutrition and how it can help us to like what impact. One second. Yeah. So what impact does it has on our health? Yeah. So, why morning nutrition? As Farooq pointed, the importance of protein, the importance of nutrition in a breakfast. So, the most important thing as the breakfast, as the word says itself, that, you're breaking the fast. So, after that last meal till the morning, the gap area is very huge. And in a way, that's the first meal of the day. So the first breakfast, like first meal of the day, we need to have breakfast within 2 to 3 hours after we get up in the morning. Now that's the most important thing. Most of us tend to skip this element, especially for the people who are homemakers or people who have got a hectic corporate life. We tend to skip this element. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है ड्यूरिंग द डे 11 बजे 12 बजे पूजा के बाद एंड इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत हाई होता है right so start strong with a nutritious breakfast it powers you through the day no matter what lunch or dinner brings on the table but globally 50 to 30% of the people they tend to skip breakfast the nutritious breakfast right reasons are nuclear individual joint cultural hectic lifestyle laziness intent to reduce weight loss of appetite in the morning मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वो दो बिस्किट ले लेंगे विद अ कप ऑफ टी और कॉफी और या दो टोस्ट ले लेंगे एंड a lot of people who are on the health program मेरे अपने फैमिली में भी my niece and nephews are there who tend to skip their breakfast एंड बिकॉज ऑफ दिस एक बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ पे key findings of Indians breakfast and habit study 1 in 4 claim to skip breakfast 60 to 80% subjects in the metro cities have inadequate breakfast and females may a quantity compared to males is still very higher you know I mean, I have a friend of mine, a very close friend of mine. Normally, he tends to have his breakfast something around 11:30, 12 in the noon, in the afternoon. Like, that's the time. So, इससे होता क्या है? Skipping breakfast has also been found associated with greater total energy intake from added sugars, a low nutrient intake, and a low healthy eating index. So होता क्या है जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो योर टेंडेंसी ऑफ ईटिंग हाई शुगर फूड गोज अप राइट दोस क्रेविंग्स एंड ऑल दो स्टफ वो इंक्रीज हो जाता है एंड विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज be it insulin sensitivity, be it your gut health, be it obesity, be it liver related issues, ये सारे जो consequence होते हैं ये इसके वजह से start हो जाते हैं. So why morning nutrition is so important? Because when we get up in the morning, our metabolic rate is low, right? The protein balance in the body is in the negative. Your insulin sensitivity
एंड ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल जो होता है ये इम्पैक्टेड होता है, एंड योर देयर इज अ ऑल्टरेशन इन योर गट बैक्टीरिया, जो गट हेल्थ है ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर मॉर्निंग न्यूट्रिशन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। Why should one eat breakfast like a king, as Farooq rightly, abhi thodi der pehle Farooq had pointed this thing. Breakfast is often called the most important meal of the day, and for good reason. Number one, it encourages healthier eating throughout the day. Your tendency of eating junk food will go up अगर आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू लो है बॉडी में। और न्यूट्रिशनल वैल्यू लो तब होता है जब हम मॉर्निंग में either we skip the breakfast or we are not eating a healthy, proper, nutritious breakfast, right? Breaks the overnight fasting period, boosts your energy levels and fuels up your cognitive power, replenishes your supply of essential nutrient आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग। सो अगर आप देखो तो जो है रात को जो बॉडी में जो रिपेयर मैकेनिज्म हो रहा है, उसके बाद जो ब्रेकफास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी को किक स्टार्ट करने में, आपका जो पूरे दिन की शुरुआत है उसको किक स्टार्ट करने में। बट दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग, एंड बिकॉज इट गेट्स इग्नोर्ड, उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखिए, आप छोटे बच्चों को देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स को देखिए, आई मीन पीपल आर डीलिंग, आई मीन ये बहुत कॉमन आपने सुना होगा, हम बहुत कम खाते हैं बट फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। सो इट इज नॉट अबाउट ईटिंग लेस, इट इज अबाउट ईटिंग राइट, यू नो। नॉट हैविंग न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हैज इम्पैक्ट ऑन 3 P's: फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ये तीनों जो चीजें हैं इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। सो नॉट हैविंग न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट इम्पैक्ट ऑन आवर फिजिकल हेल्थ। आइए देखते हैं हमारे फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द ड्रॉबैक्स इज योर एनर्जी लेवल इज लो, your endurance level is low, increase in body weight and increase in fat deposition. What are the benefits if you're eating healthy and eating right? Your energy level is high, you see a improved performance level, it helps in weight reduction and reduce fat deposition. The more you don't have the nutritious breakfast, the fatter you get. राइट, ये मेरे को बहुत साल पहले किसी ने ये चीज बोला था कि जस्ट बाय स्किपिंग मील डजंट मीन दैट यू लूज वेट, यू नो। द ब्रेन सेंड्स अ कमांड that you choose the high fat and high sugar food as a compensation, and as a consequence of this you will gain more weight instead of you feel that आपका तो वेट कम ही नहीं हो रहा है। What are the physical benefits you could experience with having a regular nutritious breakfast? You know, the visible benefits: your performance levels are improved, your energy levels are high, and it supports in growth and development, right? Healthy habit, you know, you can develop some of the healthy habit. Take a walk after every meal, including the breakfast. ये myth है बहुत बड़ी that one should not be walking post meals, you know. In fact, if you go for a walk post your meals, you will see that there is a improve in your diabetic level, there is a improved in the way body consumes the energy, there is a improved in your gut health, there is a improvement in your overall weight management में आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होएगा अगर आप ये चीज करते हो, right? So improve digestion. Walking after every meal can help you stimulate digestion by increasing the contractions of the gastrointestinal muscles, you know. Enhance blood sugar level, the blood sugar control. Walking after every meal can help you regulate the blood sugar levels. बहुत important है। And हमने ये चीज देखा है जब हम we used to put our participants on the continuous glucose monitoring chip, अगर जब हम लगाते थे हम देखते थे कि immediately after the walk the sugar would never take a spike, and we have seen that people just by incorporating this good habits, वो जो डायबिटिक मेडिसिन खा रहे थे, जो हाई ग्लाइसेमिक ड्रग जो ले रहे थे, उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ गया। उनके डॉक्टर ने ही जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन थे उसमें वो चेंजेस लेके आए बिकॉज दे कुड सी द बेनिफिट, यू नो। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्दी वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट रिड्यूसेस the heartburn and the indigestion level, and it also improves in your mood and energy levels. Very very important if you are dealing with small children, जो उनका मूड है, जो tantrums है, अगर आप देखेंगे, अगर आप सिर्फ इन चीजों के ऊपर अगर आप उनको फोकस करेंगे, उनके जो जंक फूड क्रेविंग्स है वो रिड्यूस हो जाता है, शुगर इंटेक रिड्यूस हो जाता है, एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग देयर हार्मोनल लेवल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड ऑल्सो आप देखेंगे उनके जो टैंट्रम है, जो एग्रेसिवनेस है, वो बैलेंस रहती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्टफ। What is the physiological impact that you get to see, you know? Circadian rhythm. Now,
बहुत बार ये सवाल उठता है कि अगर हमें 3 मील्स ही लेना है तो ये इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को फोकस करना. नाउ एज यू कैन सी द राइट साइड ऑफ द पिक्चर. नाउ देर इज अ टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड देन फ्रॉम सनसेट टू सनराइज. नॉर्मली क्या होता है, हम ब्रेकफास्ट को ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एंड वी गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू द डिनर. And if you see the body is in the activity phase due from the sunrise to sunset, and body is in a resting phase from sunset to sunrise. So body has to perform differently. अब अगर उसको मॉर्निंग में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सो जो एक्टिविटी फेज है उसके पास वो एनर्जी ही नहीं है ये सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए. एंड रेस्टिंग फेज में इट डजंट नीड दैट टाइप ऑफ एनर्जी बिकॉज द बॉडी हैज टू डू द रिपेयर वर्क. एंड अगर आप देखेंगे, अगर आप डिनर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यू विल सी दैट योर लिवर गेट्स impacted. There is an impact on your pancreas. There is an impact on your sugar level. There is an impact on your insulin sensitivity level. So हमने क्या किया, जो बॉडी का जो एक रिदम है हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया. सो जो सर्कैडियन रिदम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग है हम उसको फॉलो करेंगे. Now, derailed circadian rhythm can also have some impact on your body. Most of the challenges that we get to hear either in our family neighborhood जहां पे भी हम रहते हैं, आप देखेंगे बिकॉज ये जो डीरेल सर्कैडियन रिदम है इसको कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई है. Fatty liver diseases are on increase high, diabetic level are on increasing, inflammation, weight gain, cardiovascular diseases. ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे आपके जो हार्मोनल लेवल्स है ये सारे डिरेंज होने लगते हैं. एंड ये वो हैबिट्स है जो हम क्रिएट कर रहे हैं एंड दे कैनॉट बी taken under control through medical pills. So medical pills cannot be answer to the issues that we are creating because of our habits. Very, very important thing that you will learn in this community. What happens to your body if you do not eat proper breakfast? Body protest against not having nutritional breakfast and आपका जो cardiovascular system है ये strike पे चला जाता है. बहुत बार आप ये देखोगे, इफ यू सी द पीपल्स मेडिकल रिपोर्ट्स, यू विल सी दैट दे विल से दे आर नॉट ईटिंग, कुछ बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, फिर भी जो लेवल है हेल्थ पैरामीटर के वो डीरेंज्ड है. एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स which leads to all these issues that we see. So how does your cardiovascular strike happen? So not eating nutritional breakfast leads to HPA excess, non-stress hyperactivity, which further leads to increase in your blood pressure level, abnormal lipid metabolism आप देखते हो, and then cardiovascular disease शुरू हो जाती है. So अगर आप ये सारी चीज देखो तो ये हमारे कंट्रोल में है, बट अगर आप इसको ड्यू फोकस नहीं दोगे सो थोड़े दिन में ये ऐसी चीज बन जाती है विच रिक्वायर्स द होल फोकस आपकी लाइफ का इसी पे चला जाता है. Risk of not having breakfast, again and again the same thing. Now imagine अगर ये चीज बार बार बोली जा रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. Risk of death increases by 1.19 times, which is almost equal to 20%. Right? Risk of death from cardiovascular diseases increases by 1.87 times, which is almost equivalent to double. Risk of death from stroke increases by 3 to 9 times. So almost 300%, 339% increase हो जाती है death because of not eating a proper breakfast. What happens to your body when you do not eat breakfast properly? The body protests against not having a nutritional breakfast. Body tends to gain weight. A lot of people feel that आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, आप कम खा रहे हो तो वेट लॉस हो जाएगा. दैट स्टार्व सिचुएशन में जो हम चले जाते हैं, आप फास्टिंग करने लगते हो, स्पेशली पीपल हु फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग. नॉर्मली उनका जो विंडो ओपन का टाइम है, आप ये सारी चीज देखो. सो नथिंग रॉन्ग विद दैट फास्टिंग, लाइक बहुत सारे लोग जो उस पर, बट द एलिमेंट टू फोकस इन दैट इज डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट. अगर आपको एक मील खानी है या 2 मील खानी है, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट. राइट? सो this also leads to inflammation in the body. और बहुत बार आप देखोगे कि because of the inflammation there is a regular pain in the body. और वो पेन इसलिए हो रहा है because we tend to skip the breakfast. Right? Body protests against not having nutritional breakfast, leading to impaired blood sugar level and fatty liver. So fatty liver, हम इसको फैटी लिवर को बहुत आसानी से उसको ले लेते हैं, या लाइक देयर इज अ न्यूट्रिशन कॉल्ड कोएंजाइम Q10. अगर आप देखो, अगर आप फैटी लिवर ग्रेड से गुजर रहे हो
बॉडी कैनॉट अब्सॉर्ब कोएंजाइम Q10, या लीवर उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, और बिकॉज वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, आपके जो सेलुलर एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगी। सो हम बहुत आसानी से इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। फैटी लिवर ही तो है, ग्रेड 1 फैटी लिवर है, क्या फर्क पड़ जाएगा, या ग्रेड 2 है, या आजकल तो कॉर्पोरेट में सभी को ये चीजें हो रही है, ये इनिशियली टेलटेल साइन है विच कैन हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। So your insulin resistant, your hormonal imbalance, inflammatory response, and metabolic changes, development of type 2 diabetes and fatty liver, ये सारे consequence है of a result जब हम breakfast को skip करते हैं, right? What is the physiological benefits? The physiological benefits includes the internal body function like your sugar balance, your metabolism, your better digestion, your hormonal balance, your maintenance of muscle mass. अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है मॉर्निंग न्यूट्रिशन, ये सारी चीजों को, यू नो सो राइट। सो ये होता कैसे है, लाइक हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे वो चीज दिखाया गया है कि अगर आप एक हाई कैलोरी, लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस व्हेन यू आर हैविंग फूड ड्यूरिंग द सनलाइट टाइम वर्सेस व्हेन यू आर हैविंग आफ्टर द सनसेट। सो होता क्या है, ड्यूरिंग सनलाइट योर एनर्जी एक्सपेंडिचर इज इन द हायर साइड, higher heat production because of the physical activities that we do during the daytime. Your active fat metabolism is higher. Your muscle use for energy production is your higher. So अगर आप देखिए कि दिन में ये सारी एक्टिविटी हो रही है, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, इसके लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए, वर्सेस इफ यू कंपेयर द सेम थिंग एट नाइट, योर लोअर एनर्जी एक्सपेंडिचर इज हैपनिंग एट नाइट, योर लोअर हीट प्रोडक्शन एज नो एक्टिविटीज। मेनली हम सो रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। जो आपका फैट मेटाबॉलिज्म होता है ये लो होता है एट नाइट, एंड जो आपका मसल रिकवरी एंड रिपेयर है, तो ये जो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ये रात को हो रही है। सो इट इज वेरी लॉजिकल कि द ब्रेकफास्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिनर, बट बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ दिस हम जॉब और अदर एक्टिविटी के वजह से हमने डिनर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। द डिनर टाइम इज द फैमिली टाइम, एंड मॉर्निंग बिकॉज वी आर इन अ रश, या तो हम एक एप्पल ले लेंगे, या थोड़ा सा फ्रूट खा लेंगे, या रास्ते में चलते वक्त वड़ा पाव खा लेंगे, राइट, या एक पैकेट ऑफ बिस्किट्स ले लेंगे, 2 टोस्ट ले लेंगे। सो अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे शुड बी डूइंग, and as a result the lifestyle disorder is on a high, and because of this lifestyle diseases, hence अगर आप देखोगे बहुत सारे ये लाइफस्टाइल जो डिसीज हैं आज की तारीख में, there is no permanent cure for it. When you visit a doctor, the doctor prescribes you certain medication, and वो medication basically क्या कर रहा है, वो सिम्टम को सप्रेस कर रहा है, क्योर नहीं कर रहा, और उसका क्योर है भी नहीं उस मेडिकल पिल में, बिकॉज ये सारी चीजें तो हम पैदा कर रहे हैं। वी आर गिविंग बर्थ टू ऑल दिस इश्यूज दैट वी सी। So what is the physiological benefits with healthy breakfast? Now अगर आप इसको देखेंगे तो जो मील टाइम है जो सर्काडियन रिदम का है, an important link between the circadian rhythm and the gut microbiota. So अगर आप देखिए जो आपका gut bacteria है, now obviously on the gut health we will have a separate session, but जो आपका gut bacteria है, the 85% of the bacteria needs to be the good bacteria, the 15% of the bacteria the bad bacteria, but because of our habits, because of our eating pattern, because of the choices that we make, ये other way around होता है. So your good bacteria is only 15% and the bad bacteria is almost 85%, and which leads to all these lifestyle disorders, So let's see some psychological impact what it creates, So the psychological impact of not having a nutrition breakfast is it leads to short-term energy supply, which further leads to inadequate blood supply to the brain, and जो आपका alertness level है वो reduce रहता है। So आप देखोगे कि आपको fresh feel नहीं करते हो सुबह उठने के बावजूद। आप देखोगे कि despite eating it the right set of amount, I'll not say the nutritional level, but at least the quantity जब आप खा रहे हो उसके बाद भी आप देखोगे आपके अंदर वो energy level नहीं आती है जो होनी चाहिए, and this is the reason why it so happens, So the psychological benefits of the mental well-being, अगर आप इस चीजों को फोकस करते हो तो आपका जो मेमोरी लेवल है वो इम्प्रूव होता है, जो कॉग्निशन लेवल है, जो मेंटल क्लैरिटी है, मूड, स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीजों में आप देखोगे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखोगे if you just start focusing on this, So there was this research which was done.
And they figured out that the level of nutrition in your body plays the most important role in the body. There was the scientist called Carl Renberg in 1934. He did this research where he figured out that the challenge is not in what we are eating, the challenge is in the nutritional level. How much are we eating and when are we eating? Ye main important factors the what he figured out. And this is what, and after this entire research, the most important element that came out was the morning breakfast and the morning nutritional level. And thank God we are a part of this community. हर ये चीज याद नहीं रह सकती, हर ये चीज समझ में नहीं आता है, बट जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, जब आप दूसरों के भी प्रैक्टिसेस को देखते हो, जब आप ये देखते हो कि उनके हेल्थ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इट इज लाइक यू आर नॉट लर्निंग अलोन, यू आर लर्निंग इन अ लाइक यू आर लर्निंग एज अ ग्रुप एंड यू आर लर्निंग विद अदर्स experiences also, I would say. So it is very, very important when जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, आप जो राइट हैबिट्स डेवलप करते हो, आप देखोगे दैट कैसे फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग द राइट हैबिट्स इन योर लाइफ, right? So some other psychological benefits also. So there was this review of 45 different studies on breakfast, and what they figured out was regular breakfast consumption leads to a better thinking and understanding, memory and attention. So, right? So ये है कुछ benefits what we just discussed, be it physiological, physical and psychological. अगर आप ये देखेंगे तो ये वो चीज है जो अभी हमने डिस्कस की थी, that it leads to better metabolic health, gut health, vascular health, and efficient utilization of energy and satiety. Optimum energy levels manage weight, build muscle mass. So muscle mass बहुत important है. बहुत सारे लोग जब weight loss program पे जाते हैं, it is very important to focus कि आपका fat loss हो रहा है या आपका muscle loss हो रहा है. द वेट मैनेजमेंट का सबसे अच्छा प्रिंसिपल ये है कि आपका फैट लॉस होए एंड पैरेलली दैट्स द राइट टाइम टू बिल्ड द मसल मास. Your mental well-being is improved if you just focus on all these parameters. So some of the daily reminders, the do's and don'ts. Focus more on fruits. Eat a fruit before breakfast, at least 30 minutes before the breakfast. Single type of fruit, mind your portion. Sometimes मजाक में बोला गया था, किसी ने रिकमेंड किया कि ईट पपाया, अब वो आधा पपाया लेके बैठ गया था एक ही टाइम में कि मुझे तो पपाया बोला है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट fruit and what portion you need to focus on. Always avoid mixed fruit bowl, because हर fruit का glycemic load अलग अलग होता है, उसका glycemic index अलग अलग होता है. It is not a good idea to mix fruit bowl. Lot of people think कि जब हमने फ्रूट बाउल ले लिया है या फ्रूट का प्लेटर ले लिया है, अलग अलग फ्रूट है तो बॉडी को सारा न्यूट्रिशन लेवल मिल रहा है. ऐसा नहीं होता है. सभी के ग्लाइसेमिक लोड अलग अलग होते हैं और उसका जो इम्पैक्ट हमारे पैनक्रियास और लीवर हेल्थ पे पड़ता है वो अलग है. सो इनफैक्ट इट इज यू आर डूइंग मोर डैमेज टू योर हेल्थ रेदर देन यू आर लाइक आप उसको पॉजिटिव करने के बदले नेगेटिव कर रहे हो. Eating fruits with or after the meal is not recommended. It is recommended before the meal, right? Don't eat fruits post noon. Again, because of the glycemic load, your digestion is highest. वो follow करता sunrise to sunset. So mid noon में your metabolic health is at its best. So have your fruits before that. When to eat? Breakfast to be had within 2 hours of waking up, maximum by 9 a.m. ये 9 a.m. भी exception to the rule है. Otherwise, normally, like अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो आपको 8 बजे तक अपना breakfast कर लेना चाहिए. Also, it is recommended कि आप अपने walk पे जो जा रहे हो, go after having a proper protein intake और फिर जाइए. Dinner maximum by 7 p.m. and avoid late night dinners and late night snacking. No snacking between the meals, no late night snacking, you know. बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि स्मॉल मील पोर्शन खाना चाहिए, बार बार खाते रहना चाहिए. मैं आपको सिर्फ एक ही बात करूंगा कि द इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड होलिस्टिक हेल्थ. ये कोई भी एक पैरामीटर ले लेता है, उस पैरामीटर को सोशल मीडिया पे देख लेता है. इट इज नॉट करेक्ट. द करेक्ट वे टू लुक एट हेल्थ इज अ कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ, अ कंप्लीट 360 डिग्री अप्रोच टुवर्ड्स योर हेल्थ. Don't eat rice and roti together. Either eat rice or roti for lunch. Eat fulka or roti instead of paratha and puri. No rice during the dinner. Again, because of the glycemic load of the food. रोटी का glycemic load अलग है, राइस का अलग है. ये दोनों का जो impact है आपके liver पे and pancreatic health पे different जाता है. When you merge two glycemic level of food, it creates an impact. It creates a negative impact on your liver health.
limit the quantity of bread as it is processed. We should घर का खाना और घर में खाना दो अलग अलग चीज है. Bread जिसमें preservative होता है, it is मैदा, it lack fiber, it is not recommended. And trust me, brown bread, multigrain, any sort of bread which is made in a factory, trust me, it is not recommended. Replace bread with roti, whole wheat or multigrain. Read the label. Do not eat white bread. Don't get carried away by large adverts. Check the ingredients yourself. And fifth, eat breakfast like a king. 50% of the daily calories should be consumed at breakfast. 50% of a plate should have protein and fiber. Do never ever skip your breakfast. And the most important slide, that's the last slide for the eve. Start every day with gratitude and optimism. Have your nutrition in time. Have an intention, visualize and set a clear intention. Yesterday I met a friend of mine who is around 47 years of age. And कल जब हम health के बारे में बात कर रहे थे, and he said, what do you think? What should be my health goal? I said, the first health goal that you need to have yourself is that you want to live a medicine-free life. And कल जब मैं उसके medical prescriptions देख रहा था, I said, why did you set a health goal where you don't have to depend on all those stuff? So medical science advancement is good. What it is doing is we are living longer. जो हमारा life span है वो तो long हो गया है, but जो हमारा health span है वो बहुत छोटा हो गया है. So very early ages in our life we are medicine dependent. एंड जो लाइफ स्पैन है वो तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बट जो मेडिकल डिपेंडेंसी है वो बढ़ गई है. और मेन रीजन ये है जो हमारे बेसिक्स थे, वी हैव टेकन दोस बेसिक्स फॉर अ टॉस. I hope you picked up something new today. Each time when I present or we are doing this thing, even we learn something new. And as Farooq always says, exercise daily. You know why? You rest, you rust, and when you rust, you die. So, uh, आज की sedentary lifestyle में where our physical activities has come down as low to 20 minutes. जब मैं कम्युनिटी का पार्ट नहीं था और मैं ये चीजों को मेजर नहीं करता था, one day I realized that my whole day movement, from my bedroom to my office to car, everything put together, वो 1 किलोमीटर भी नहीं होता था. That was my physical movement in a day. And once you start focusing, and the only goal which I had was I want to live a medicine-free life. That was the only goal which I wanted initially. And वो चीज जब मैं धीरे धीरे मैं कम्युनिटी में मैं सीखने लगा, and that is what it is helping most of us to have a healthy health span, which is leading to a great lifespan. So I hope you picked up something. Do join us onto this community. Participate actively, because the principles that you are going to learn over here, that you are going to see the experience of the community, I'm sure it is going to help you to have a healthy health span and as a result, a lifespan. So thank you very much. Looking forward to see you next Monday. Over to Ruchita. Thank you so much, Raj. Guys, like Raj said, right? I hope you've learned something new. I hope we become more intentional. We understand the foods to incorporate. Let's make our breakfast plates interesting and get on with it. With that, we come to an end of this session. You've been a great audience. Thank you so much. See you in the next one, next Monday.